Students in topic 6.12.2 will study collisions in one dimension, and here we'll consider a collision which is completely inelastic. Okay, so we know that in completely inelastic collision the deformation is not relieved, and because of that the kinetic energy will be lost. So initial kinetic energy will be bigger than the final kinetic energy, whereas the momentum, the total momentum of the system will be conserved. So now let's start. So this is the figure in which we'll be considering collision of two balls M1 and M2. Ball M1 is having initial velocity V1I, and this is the direction of its velocity. Ball M2, it is stationary, so its initial velocity V2I is 0. V2, that is the velocity of ball 2, and we have written here I. It shows that this is initial velocity of ball 2. Okay, this was initial velocity of ball 1. The ball 1, its mass is M1, and ball 2, its mass is M2. Now just see here, when these two balls collide, this ball was stationary, this ball was moving in this direction. So it will come and collide with this ball. After collision, as this is a completely inelastic collision, both the balls will move together. So the final velocity of both the balls is going to be same. Initially the velocities were different. Okay, ball 2 was at rest and ball 1 was having velocity V1I. But after collision, both the balls will be moving together. And if both the balls are moving together, then in this figure, what about theta 1 and theta 2? These angles will be 0. अगर ये वाला ball ऐसे ना जाके ऐसे चल रहा है, in this direction. Same way, this ball is also not moving in this direction. But suppose if this ball moves in this direction, then this angle theta 1 and theta 2 will be 0. Okay. So now remember these 3 points, that here both the balls will move together after collision, kinetic energy of the system will be lost, and total momentum of the system will be conserved. Now for calculating the change in kinetic energy, we need to calculate the final velocity of the ball. Okay. See, this is the final velocity of ball 1 and this will be the final velocity of ball 2. Of course, the direction will be this, as we have considered theta 1 and theta 2 to be 0. Why we have considered like this? Because this is completely inelastic collision where both the balls move together. So now in order to obtain the final velocity of both the balls, we'll consider the law of conservation of momentum. Okay, so according to this law, the initial momentum of the system will be equal to final momentum of the system. Now the system is made up of two balls. Okay, so initial momentum of the system will be what? Initial momentum of ball 1 plus initial momentum of ball 2, and final momentum of the system will be final momentum of ball 1 plus final momentum of ball 2. So now see, you know the formula of momentum is mass into velocity. So here I want to write momentum of first ball. So mass of first ball into initial velocity of first ball. So this is momentum of first ball, initial momentum of first ball, plus initial momentum of second ball. So mass of second ball multiplied by initial velocity of second ball. And same way we will be writing for the final velocity of the system. Okay, this is final momentum of first ball and this is final momentum of second ball. Now from this, see, we know that ball 2 was stationary, right? तो अगर बॉल 2 स्टेशनरी है तो V2I कैसा हो जाएगा? It will be 0. You can see here in this figure, V2I, initial velocity of second ball is equal to 0. And we have also substituted theta 1
and theta 2 as 0. So V2I is equals to 0. Now both the balls are moving together as theta 1 and theta 2 were 0. If both the balls after collision are moving together, then final velocity of ball 1 and final velocity of ball 2 are going to be equal. So if the velocities are equal, we'll give them a common name. तो instead of writing this 1 and 2, हम इसको सीधा कैसे लिख देंगे? VF लिख देंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बॉल 1 और बॉल 2 दोनों की कैसी है? सेम है. आफ्टर कोलाइजन दोनों सेम स्पीड के साथ में ही चलते हैं. सो नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज ओवर हियर, ये V1F के बदले क्या लिख देंगे? VF. V2F क्या लिख देंगे? VF. ठीक है. और यहां पर V2I के बदले 0 डाल देंगे, तो ये टर्म गायब हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म ही बचेगी, तो वो हमने लिख दिया. एंड फ्रॉम दिस टर्म, if I substitute here VF and VF, I can take that VF common, तो M1 plus M2 बचेगा. Now I wanted to calculate final velocity of both the balls. So VF को subject बना देंगे, तो मुझे final velocity मिल गई. Give this equation a number 1. Okay. Now हमारा aim क्या था? हम क्या ढूंढना चाहते थे? Kinetic energy में loss कितना होता है. So delta K is equals to change in kinetic energy. Generally change in kinetic energy is written as final kinetic energy minus initial kinetic energy, but here we have written initial kinetic energy minus final kinetic energy. Why like this? Because we know that in this process kinetic energy जो है उसमें लॉस होने वाला है. मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी बिगर एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी स्मॉलर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लाइक दिस KI minus KF. ओके. एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम हमेशा बड़ा माइनस छोटा करेंगे. ठीक है. तो जब इसका आंसर हम डिराइव करेंगे, हम देखेंगे कि डेल्टा के की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलती है कि नेगेटिव. वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी पॉजिटिव. Okay, because we know that this is completely inelastic collision, और ऐसे collision में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से बड़ी होती है. तो जब मैं ऐसा डिफरेंस लूंगी, मेरा आंसर डेल्टा के कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव ही आना चाहिए, जिससे कि प्रूव हो जाता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बड़ी है. और अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बड़ी है तो एक और बात प्रूव हो जाती है कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है. इसी की वजह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें छोटी मिली. तो अब हम देखते हैं. सी, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ mv². इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखनी है. ये सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है. तो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 2. तो बॉल 1 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखी है, जस्ट सी हियर, हाफ m1 v1I square. This is initial velocity of ball 1. This is mass of ball 1. So this is initial kinetic energy of ball 1. Initial kinetic energy of ball 2 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, and the reason is velocity of ball 2. Initial velocity of ball 2 कैसा था? 0 था. So initial kinetic energy of ball 2 कैसा है? 0 है. So वो टर्म मैंने यहाँ नहीं लिखी है. उसके बाद अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखनी है सिस्टम की. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं हम? इट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 2. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1 कैसे लिखेंगे? हाफ m1 इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1. बट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 को तो हमने VF बोला था. ठीक है. प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 2. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 2 कैसे लिख सकते हैं? हाफ m2 इंटू v2F². बट v2F को तो हमने VF बोला था. ठीक है. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1 प्लस बॉल 2, उसमें से ये हाफ और VF² कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? m1 प्लस m2. अब इसको सॉल्व करते हैं आगे. So this term we have written as it is, and in this term we will be substituting the value of VF from equation 1. So instead of this VF², I have to substitute this.
इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू कैन सी दैट दीज टू क्वांटिटीज विल गेट कैंसल्ड. सो इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स बच जाते हैं दे आर लाइक दिस. Now we need to solve this. So from this you can see we can take half m1 v1 I square as common. So यहाँ क्या बच जाएगा फिर 1 माइनस यहाँ पर क्या बचता है, एक m1 हमने बाहर निकाल दिया. So 1 m1 will remain and in denominator m1 plus m2 will remain. After this we'll take LCM in this term. So ये m1 plus m2 को सीधा इधर मल्टीप्लाई कर दो and this whole divided by m1 plus m2. यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो this term m1 and m1 will get cancelled because this is positive m1 and this is minus m1. So this will get cancelled. तो अंदर क्या बचेगा, m2 upon m1 plus m2. तो ये है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पर मैंने लिखा है. एंड सी एज वी डिस्कस्ड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है. और मैंने इक्वेशन कैसे लिखा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, के आई माइनस के एफ लिखा था. तो अगर डेल्टा के पॉजिटिव आ रहा है इसका क्या मतलब हो जाता है कि के आई जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बिगर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, विच मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. Okay.